all who feels themselves as one with thee, Each who feels himself as one with thee, know they are therefore one with every other. no fear, one with every other. શાંતિ 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 શાંતિ. આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. धन्यवाद अतुल भाई। और बस हम शुरुआत करते हैं। छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय शिखर जी का दे दूं। और धन्यवाद मृणाल जी, धन्यवाद अर्चना जी। वे बैचलर ऑफ साइंस हैं, नॉटिकल साइंस में उन्होंने किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। मर्चेंट शिपिंग में रहे और वॉलंटरी रिटायर हुए। 10 साल उन्होंने यहाँ पर सर्विस की। उसके बाद वे अपनी इनर जर्नी की ओर मुड़ गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन्होंने ज्वाइन की 2008 में और तब से अभी तक एकदम सक्रिय हैं। विरासत में मिली थियोसॉफी, वासुमती जी को हम सभी जानते हैं उनके द्वारा। नेशनल लेक्चरर तो हैं ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेक्चरर भी हैं। स्टडी कैंप, सेमिनार, यूथ कैंप, पब्लिक लेक्चर और हर कन्वेंशन जो अडियार में होता है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर रहती है। इंटरनेशनल मैगजीन में भी काफ़ी कुछ इनके आर्टिकल्स छप चुके हैं। यूट्यूब चैनल इनका है प्रज्ञा सी स्टूडियो, जो मई 2020 में उन्होंने शुरू किया था कतलीना जी के साथ, और अभी भी वो एकदम सक्रिय रूप से है, यूथ से जुड़े हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि बहुत शानदार व्यक्ति हैं। तो सर, महाभारत 5, महाभारत 1 थी लेकिन आपने 5 कर दी। धन्यवाद। Thank you, Taralji, for your kind words, and good evening, everyone. And welcome to this 5th session of Mahabharat, the great, although the Mahabharat is the great India, but somehow it is named as Mahabharat, the great battle. So, and we have we have covered a lot of a story in this till now, and where we closed last time when the Drona Parv closes, that is when Bhim killed an elephant named Ashwatthama, and then this lie was spread to reach Dronacharya. He did not believe it, but until he heard it from Yudishthira, who said Ashwathama died, but an elephant, but it was still a lie. So hearing this, Drona sat on meditation, and then Dhishtadyum took out his sword and he slain the Dronacharya. And as a result of which, Ashwathama wanted to take revenge from Arjun and Krishna of this, but he was not able to. And later on, Narad explained to him that who are Krishna and Arjun basically, and why his weapons could not harm them much. And at the close of the day, Vyas Arjuna asked the Rishi Vyas that he saw a being going before his chariot, slaying those who were apparently slain by Arjun. It seemed like they were already slain. So Vyasa explained to him that it was Mahadeva or Mahakal, basically that their time has come and they were already dead. Arjun was only the medium. So that is the difference. That is the kind of realization that takes us from Karta Bhav to Akarta Bhav, means, and that is the main point that binds us or anyone with the action. If it is being done with a center of I, then that I has to face the consequences. But if there is no I inside and only the action is done as part of duty, as part of divine will, then it does not attract any individual or personal consequence. And at that, Drona Parv closes. So after the death of Drona, Karna, he was made the army general, and that was the 16th day of the battle. And the beginning of the day, he fought with Nakul, one of the Pandavas, defeated him, but he did not kill him because he promised his real mother Kunti
that no matter what the outcome of the battle is, her 5 sons will remain alive. If Arjun dies, Karn will remain alive. If Karn dies, Arjun will remain alive, and the other 4. Similarly, Yudhishthir fought Duryodhana and defeated him, but again spared his life because he knew Bhim has taken a vow to fight him. So, I mean, those were the times when people thought a lot, especially the people with moral compass, thought a lot about their words, their promises, and uh, tried to fulfill them as much as possible. And even on the 16th day, when Karna was not able to defeat Arjuna, he took a vow that next day, the 17th day, either he will slay Arjuna or he will himself be slain by him. And for this, he requested the help of the king, one king of a Madra Desh, Madra country region, whose name was Shalya, and who, although was a relative of the Pandavas, but he was tricked by Duryodhana to join his camp. At that point, he asked forgiveness from Yudhishthira, but Yudhishthira said that although your body will be there, but please keep your mind, your heart with us. And when this opportunity came, although he felt it as an insult that he was a king and he was asked to be the driver, the charioteer, but then Duryodhana explained him that on the other side, Krishna is the driver and Arjuna is the warrior. So to match both the sides, it will be a balancing thing if Shalya drives Karna's chariot. So he took this as an opportunity and tried to manipulate Karna psychologically by demoralizing him, by praising Arjun, that how great is Arjun and how his arrows were to the right at the aim, and nobody can defeat him. So this was his way of demoralizing. So that is very important also, that if you have a person near you who is all the time saying negative things, it is very, it takes a lot of effort or willpower or self-confidence to not get affected by that. But since Karna was not like that, so there was already inauspicious beginning of the day. Then Karna fought that day Yudhishthira and defeated him, but Bhim took his place and then he started fighting Karna and he broke his chariot also. But soon, however, Yudhishthira came back in the battle, and along with the Yudhishthira, there was Nakul and Sahdev, and he defeated all the 3, but did not kill them and went to support Duryodhana, who was in a lower status, I mean, who at the receiving end of the beam. Arjun, meanwhile, defeated Ashwathama and was looking for his elder brother Yudhishthir. Yudhishthir welcomed him joyfully, but there was some misunderstanding occurred between the two, because Yudhishthir thought that he had already killed Karna and in the battle, and then he has come. But when he said no, he has not yet, so there was some misunderstanding. But fortunately, Shri Krishna was there to help resolve it. They lovingly embraced after that, and that period of storm was over. And then Arjun went back to the battle, blessed by Yudhishthira, and took a vow not to return until Karna was slain. Now, as Arjun went on to reach Karna, Dushasan, that is the second, the younger brother of Duryodhana, he went to fight Bhim, and a fierce duel started between the two. And of course, Dushasan was no match for Bhim, so it ended soon when Bhim hurled his terrible mace against his hated foe. Dushasan fell on the ground, and then Bhim leapt to the earth, and he remembered that insult that was done to Draupadi in the court, and he seized his sword, ripped open Dushasan's chest,
and drank some of his blood. We can imagine, and then striking of the head of Dushasana. It was a terrible deed that struck fear and horror into all who were looking at that time. And it, even imagining that, we can think how horrorful or frightful scene that would have been, or how much anger was there inside Bhim to take revenge of Draupadi's insult. Now there is something happening that both the parties were waiting for a long, long time, and that is the battle between Arjuna and Karna. And it is something that even the gods themselves came to see combat, because Arjun was supposedly the son of Indra, and Karna was the son of the sun god. So when Arjun invoked the Brahmastra, the Karna baffled his force and sent again his foe, the Nagas, or the fierce snakes of fire. Then a mighty snake, whose, we remember, if we discussed that Arjuna burned a forest, the Khanda one, and the mother of the one of the snakes remained, Takshak, whose mother was slain in that burning of the forest. So he was also boiling to take revenge against Arjun. So he entered Karna's quiver, and as a blazing shaft, when shot from Karna's bow, it flew through the air. But here again, we see, as in the past, now, and in the future, why is it said that if you are on the side of God or truth or divine, or, or something like that, you get help? Of course, depending as per your karma, but also in this case, that arrow that was shot by Karna was lethal, and it would have definitely taken the life of Arjuna. But what Sri Krishna did, he sank the Arjuna's chariot a cubit's feet depth into the earth. So instead of hitting his chest or a vital area, it hit the diadem that was given to Arjun by Indra, and it fell flat on the ground. But Arjuna was not harmed, and his chariot was sunk, and then again Keshav or Krishna escaped the death. The snake returned again to Karna's quiver, but Karna refused to launch the same arrow twice. So the snake on its own hurled himself at Arjun, but he cut him into pieces with his shafts. Now, pressing his enemy hard, Arjuna made him drop his weapons, excelling on each and every aspect. But he stopped for a while because he was not willing to slay Karn while he stood weaponless. So there, that the thing of morality, that if somebody is weaponless, do not attack. But here, Krishna urges him that he is a warrior, he is fighting, you have to overcome him. But in the meanwhile, Karna recovered, he took up his bow, and a voice came to Karna that the earth is devouring thy wheel. And the left wheel of Karna's car began to sink deeply into the ground. Now, this is related to two of the curses that Karna received during his early years, that a Brahmana whose calf had been heedlessly slain by Karna cursed him that on the approach of his death hour, the wheel of his car should sink into the earth in battle. And also later on, when he was trying to use his mantra for the weapon, he forgot. That was due to the curse of his guru, Parshuram, who taught him all these weapons. But since Karna himself did not know that he was of a warrior class, so he thought he was, because he was raised up by charioteer, but while his guru was sleeping with his head on his thigh, and a scorpion came and it was stinging Karna, the blood was coming, but he did not move.
so that the guru will not be disturbed, his sleep will not be disturbed. On seeing this, when the guru woke up, he said, no, you cannot be anybody else but from a warrior class, and I do not teach the warrior class, so you have lied to me. So I curse you that when you will need it the most, you will forget this knowledge. So at this point, when he is trying to remember, he forgets. And the despair struck him and he began to rail. Now, as a last resort, he took refuge in righteousness. He told Arjuna to wait till he had freed his wheel and told him how virtuous he is and appealing to his higher nature and for his protection. But at this moment, Krishna told to him bitterly, to Karna, that yes, you are remembering the virtue when you are facing the difficult conditions. Where was this virtue when you were dealing with Pandavas, when you poisoned Bhim in the house of lac that was burned, the insults of Draupadi, or when Abhimanyu was killed by so many warriors altogether? Then Karna, leaving his wheel, tried to again take the weapon, but it was Arjuna's turn to stagger back. And then Arjuna, recovering, shot again at Karna, and he struck off Karna's head, and the great warrior fell. And from his body of forth from the body of the sun god came a radiant light that ascended and mingled with the sun and the sun rays. Nearing the setting, touching the body of Karna, seemed stained with his lifeblood, painting the sky with crimson. So that is a very poetic description that Annie Besant had given. Then the battle ceased, and the camp of Kauravas resounded with wailings, and that of Pandavas with joy, that Karna had been slain. The next day, the 18th day, was is called the Shalya Parv, and Shalya was made the commander-in-chief for a brief time, because very soon Yudishthira battled him, and he discharged a blazing weapon through Shalya's chest, and he fell on the ground. Now only Duryodhana and Sudarsh remained. Even later on, only Duryodhana remained, and he fled towards a lake and took refuge in its depths, being so tired. And he created a spell around him, a bubble, air bubble, and by his magic, mystic powers, occult powers, and then he was at the bottom of that lake. 3 other warriors were remaining, which were Kripacharya, Ashwathama, and Kritvarman on the Kuru side. And when they came to know that Duryodhana is lying at that place where Bhim defeated him, they went to him, and they told him, to regain energy and to continue the fight, but he refused. But Duryodhana made Ashwathama the commander-in-chief and pushed him to take the revenge in whatever way he can. And in the meanwhile, some of the people knew that Duryodhana has taken refuge in the lake, and they informed Pandavas, who came out at once to the hiding place where Duryodhana was taking refuge. So from the top, Yudishthira challenged him to come out and do battle for the crown. But Duryodhana initially asked for a respite, for little rest, but still he said that I am alone and you are so many of you, but still I can resist all of you. And he challenged them to fight him one at a time. Then Yudhishthira asked to this battle, and this is again something what Yudhishthira said was not so practical, because he offered Duryodhana that you can choose the warrior, you can choose the type of battle, and if you win that battle, you can, remain the king. So at that moment, he didn't think if Duryodhana had chosen, suppose Nakul or Sahadev for Gada Yuddha or the mace battle, he could have easily defeated them. But Duryodhana also had some sort of this self
dignity or self, to have an equal competitor. So he chose the mace battle, but with Bhim. And Yudhishthira provided him with armor and all he needed, and Bhim was put forward. Then they go on fighting and fighting, and at that time Balram, who was Krishna's elder brother, also came to see the last duel between the two warriors. That was to end their lifelong rivalry. Balram had come there having set up, because initially Balram said, I don't want to take part in the battle and I'm going on a pilgrimage, and refusing to help either side. As they fought, they were kept on fighting and fighting, but no result was coming out. So Krishna reminded Duryodhan Krishna reminded Arjun to remind Bhim of his vow by, to break the thigh of Bhim, of Duryodhan. And Bhima took the sign, took the hint, and watching his opportunity, he whirled his mace to throw on Duryodhan's thigh, fracturing it with the blow. Then Bhim, mad with old memories of wrong, approached his helpless opponent, and bidding him remember the insulted Draupadi, he touched his fallen head with his left foot, to which people who were seeing this disapproved it. Yudhishthira also said that he is a king, he is your brother, he is fallen, so do not touch a king and a kinsman with thy foot. More than that, Balram, who was the guru of mace, the battle for both of them, was furious, because by hitting the thigh of the opponent, Bhim broke the rules of this battle below the waist, by hitting below the waist. And he rushed upon Bhim to slay him, but again Krishna flung his arm around him and with gentle words soothed his anger, reminding him of Bhim's vow. And then Balram mounted his car and went away, leaving the sons of Pandu sad at heart. And with this, the first part of today comes to an end. Thank you, Shikhar ji. And we go here ahead, Mrinal ji. I'll just give a short introduction of yours. Mrinal ji is Mrinal Radhe Joshi. She is an MSc in Zoology, Mumbai University. Joined Pune Theosophical Lodge in 2017. प्राणिक हीलिंग का कोर्स उन्होंने किया है अर्हत लेवल तक, और महाभारत का एक भाग बनी हुई है. तो मराठी में आप शुरू कीजिए. थैंक यू. मैं आपकी प्रस्तुति दिखाता रहूंगा, तो आप बोलते रहेंगे, मैं दिखाता रहूंगा. थैंक यू तरल जी, थैंक यू शिखर जी. देख पा रहे हैं आप? गेल्या वेळेस आपण इथं थांबलो होतो. अश्वत्थामाने केशव आणि अर्जुनाला मारण्यात अपयश आल्याने दुःखी होऊन रणांगणातून पळ काढला. व्यासांना भेटल्यावर त्याला केशव आणि अर्जुनाचे खरे स्वरूप आणि त्याचे अस्त्र त्यांना का मारू शकले नाही हे कळले. त्यानंतर त्याने सैन्याला रात्रीसाठी विश्रांतीस सांगितले आणि युद्ध थांबले. युद्ध संपल्यावर अर्जुनाने व्यासांना विचारले की जो एक पुरुष त्यांच्या रथासमोर जाऊन त्याच्याकडून मारलेल्यांना मारत होता तो कोण होता. त्यावर व्यासांनी त्याला सांगितले की तो स्वतः महादेव होता आणि त्यांनी महेश्वरांच्या महानतेचे अद्भुत वर्णन केले. यासोबतच द्रोण पर्व समाप्त होते. आता आजचा भाग कर्ण पर्व. युद्धाच्या 16व्या दिवशी कर्णाला सेनापती बनवले गेले. त्याने युद्ध केले, नक्कीच विजय मिळवला, पण कुंतीच्या प्रेमाखातर त्याने नकुलाचा जीव वाचवला आणि त्याला पराभूत व लज्जित स्थितीत सोडले. युधिष्ठिरानेही भीमाच्या प्रतिज्ञेची आठवण ठेवत दुर्योधनाचा जीव वाचवला. त्या दिवसाचे सर्व श्रेय पुन्हा अर्जुनाकडे गेले, ज्याने सर्वांना पराभूत केले. त्या रात्री कर्णाने पुढच्या दिवशी अर्जुनासोबत समोरासमोर युद्ध करण्याचा निर्धार केला आणि त्याला ठार मारण्याची प्रतिज्ञा केली अथवा त्याच्याच हातून मृत्यू स्वीकारण्याची. परंतु त्याने मद्र देशाचा राजा शल्य याला आपला सारथी बनवण्याची विनंती केली, जेणेकरून तो अर्जुनाशी समसमान लढू शकेल. सुरुवातीला शल्याने या विनंतीला अपमान समजून संताप व्यक्त केला, परंतु दुर्योधनाने त्याला समजावून आणि शांत करून
या गोष्टीला राजी केले, कारण तो स्वतः केशवाच्या विरुद्ध उभा राहणार होता. अशा प्रकारे कर्ण शल्याला सारथी बनवून युद्धाला निघाला. पण सकाळी सारथी आणि योद्धा यांच्यात वाद झाला. शल्याने कर्णाला त्याच्या बढाईबाजीसाठी सुनावले आणि अर्जुनाचे कौतुक केले. कर्णाने युधिष्ठिराचा पराभव केला, त्यामुळे युधिष्ठिराला रणांगण सोडून जावे लागले. पण भीमाने आपल्या भावाच्या पराभवाचा सूड घेतला आणि कर्णाला अचेतन केले व त्याचा सारथी युद्धभूमीबाहेर पळून गेला. मात्र लवकरच कर्ण पुन्हा युद्धात परतला आणि काही वेळाने युधिष्ठिर, नकुल आणि सहदेव यांच्याशी सामना करत त्यांचा पराभव केला. त्यानंतर भीमाच्या तडाख्यात सापडलेल्या दुर्योधनाच्या मदतीसाठी तो झेपावला. दुसरीकडे अर्जुनाने अश्वत्थामाचा पराभव करून मोठ्या भावाची भेट घेतली. युधिष्ठिराने त्याचे आनंदाने स्वागत केले, पण काही गैरसमज निर्माण झाले. सुदैवाने श्रीकृष्णाच्या उपस्थितीमुळे त्यांचे निराकरण झाले. अर्जुन आणि युधिष्ठिर प्रेमाने एकमेकांना आलिंगन देत शांत झाले आणि युधिष्ठिराच्या आशीर्वादाने अर्जुन पुन्हा युद्धात उतरला, कर्णाचा वध केल्याशिवाय परत न येण्याची प्रतिज्ञा घेत. जेव्हा अर्जुन कर्णाकडे जात होता तेव्हा दुःशासनाने भीमाला रोखले आणि त्यांच्यात भीषण द्वंद्व झाले. शेवटी भीमाने आपल्या प्रचंड गदामाराने दुःशासनाला जमिनीवर आदळले. त्यानंतर भीम खाली उतरला आणि द्रौपदीच्या अपमानाची आठवण ठेवून त्याने आपली तलवार काढली. दुःशासनाची छाती फाडली आणि त्याचे रक्तप्राशन केले. मग त्याने आपल्या पत्नीच्या अपमानकर्त्याचे शिर उडवले. हे एक भयंकर कृत्य होते, जे पाहून सर्वांना भीती आणि धक्का बसला. एका अशोभनीय अन्यायाचा भयंकर परिणाम. आणि आता अर्जुन कर्णाजवळ पोहोचला आणि आपल्या जन्मभराच्या शत्रूवर हल्ला केला. हे युद्ध पाहण्यासाठी स्वतः देवताही उपस्थित होत्या. अर्जुनाने ब्रह्मास्त्राचे आव्हान केले, पण कर्णाने त्याचा प्रभाव निष्फळ केला आणि आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर प्रचंड अग्निसर्प पाठवले. तेव्हा एक महाशक्तिशाली सर्प, ज्याची माता खांडवन दहनाच्या वेळी मृत्यू पावली होती, तो अग्निस्वरूप बाण म्हणून कर्णाच्या भात्यात प्रवेशला. कर्णाने तो बाण सोडताच तो आकाशातून झेपावला. याच वेळी केशवाने अर्जुनाचा रथ जमिनीत एक हस्त खाली दाबला आणि चांदीसारख्या शुभ्र गोळी झोपून राहिल्या. त्या ज्वलंत सर्पबाणाने अर्जुनाच्या इंद्राने दिलेल्या मुकुटाचा अर्धा भाग उडवून टाकला, परंतु अर्जुनाला इजा झाली नाही, कारण त्याचा रथ खाली गेला होता. अशा प्रकारे गोविंदाने पुन्हा मृत्यूपासून त्याचे रक्षण केले. तो सर्प परत कर्णाकडे गेला पुन्हा सोडला जाण्यासाठी, पण कर्णाने एकच बाण दोनदा सोडण्यास नकार दिला. तेव्हा सर्पाने स्वतः अर्जुनावर झेप घेतली, पण अर्जुनाने आपल्या बाणांनी त्याचे तुकडे तुकडे केले. कर्णावर जोरदार प्रहार करत त्याचे शस्त्र खाली पाडले, परंतु त्याचा शत्रू निशस्त्र असताना त्याचा वध करायचा नाही या विचाराने तो काही काळ थांबला. पण केशवाने त्याला पुढे जाण्यास प्रवृत्त केले. कर्णाने पुन्हा आपला धनुष्य हाती घेतला. तेव्हाच आकाशातून आवाज आला, पृथ्वी तुझे चाक गिळत आहे, आणि त्याच्या रथाचे डावे चाक खोल जमिनीत रुतू लागले. याच्या मागे 2 शाप कारणीभूत होते. एकदा कर्णाच्या निष्काळजीपणामुळे एका ब्राह्मणाच्या वासराचा मृत्यू झाला होता. त्या ब्राह्मणाने कर्णाला शाप दिला होता की त्याच्या मृत्यूच्या वेळी युद्धभूमीत त्याच्या रथाचे चाक भूमीत समाविष्ट होईल. आणि दुसरं म्हणजे परशुरामांकडे ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी कर्ण गेले असताना त्यांनी खोटेच ते ब्राह्मण असल्याचे सांगितले, परंतु जेव्हा असे सिद्ध झाले की ते ब्राह्मण नव्हते, तेव्हा परशुरामांनी त्यांना शाप दिला होता की अगदी मोक्याच्या वेळी तुला जेव्हा अस्त्रांचा वापर करावा लागेल तेव्हा तू मंत्र विसरून जाशील. तर हे दोन्ही शाप आता त्याला भोवले. त्यामुळे कर्णाला नैराश्याने ग्रासले आणि त्याने धर्मन्यायावर टीका करायला सुरुवात केली. पण तरीही तो अत्यंत उग्रपणे लढत राहिला. जेव्हा त्याचा रथ खोल रुतला तेव्हा तो रथ सोडून खाली उतरला आणि त्याने चाक बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याने अर्जुनाला गाऱ्हाणे घातले की त्याने थोडे थांबावे आणि अर्जुनाची धर्मशीलता व सद्गुण यांचे कौतुक केले. तेव्हा वासुदेवाने कटू स्वरात उत्तर दिले की
संकटाच्या वेळी त्याला धर्म आठवतो आहे, पण पांडवांशी केलेल्या वागणुकीत, भीमाला विष देण्यात, लाखेच्या महालाच्या कटात, द्रौपदीच्या अपमानाच्या वेळी तो सर्व विसरला होता. कर्णाने आपले चाक तसेच सोडले आणि अर्जुनावर आपल्या सर्वोत्तम अस्त्रांचा वर्षाव केला. त्यामुळे अर्जुन क्षणभर डगमगला. कर्ण पुन्हा खाली उतरून रथाचे चाक उचलू लागला, तेव्हा अर्जुनाने लवकर सावरत त्याच्यावर बाण सोडले. त्याने प्रथम कर्णाची ध्वजपताका तोडली आणि नंतर सत्य आणि धर्माचा संकल्प घेऊन सुटलेल्या एका बाणाने कर्णाचा शिरच्छेद केला. महान योद्धा कर्ण भूमीवर कोसळला. त्याच्या देहातून तेजस्वी प्रकाश बाहेर पडला आणि सूर्याच्या प्रकाशात विलीन झाला. अस्ताला जाणाऱ्या सूर्याच्या किरणांनी रक्ताने न्हालेल्या कर्णाच्या शरीराला स्पर्श केला आणि आकाश रक्तवर्णात रंगले. यानंतर युद्ध थांबले. कौरवांच्या छावणीत विलाप गुंजला, तर पांडवांच्या छावणीत विजयाचा आनंद उसळला. त्यानंतर शल्य पर्वाला सुरुवात होते. 18व्या दिवशी युद्धाची सुरुवात शल्य राजाच्या सेनापती पदाच्या निवडीनं झाली. शल्य पर्व त्याच्या अल्पकालीन नेतृत्वाची कहाणी सांगतो. युधिष्ठिराने त्याच्याशी अनेकदा युद्ध केलं, पण इतरांनी त्यांना वेगळं केलं. अखेर युधिष्ठिराने एक प्रज्वलित बाण सोडला, जो शल्याच्या छातीला भेदून गेला आणि त्याला युद्धभूमीत निष्प्राण पाडलं. आता धृतराष्ट्राचे फक्त 2 पुत्र उरले होते, दुर्योधन आणि सुदर्श. मग शेवटी दुर्योधन एकटाच, कोणत्याही साथीदाराशिवाय. तो एका सरोवराकडे पळाला आणि मंत्राच्या शक्तीने त्याने जलद्वार उघडून त्या सरोवराच्या गाभ्यात शरण घेतली. युद्धभूमीवर केवळ 3 योद्धे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आणि कृतवर्मा, युद्धात बचावले होते, पण त्यांचं अस्तित्व दुर्योधनाला माहीत नव्हतं. संजयाकडून माहिती मिळताच ते तिघे रात्र होईपर्यंत दुर्योधनाचा शोध घेऊ लागले आणि त्याला समजुतीनं पुन्हा लढण्यासाठी उद्युक्त करू लागले. पण पूर्णतः थकलेला दुर्योधन लढायला नकार देत राहिला. तेवढ्यात तिथे काही शिकारी त्या सरोवराजवळ आले आणि संभाषण ऐकून त्यांनी ओळखलं की तिथे लपलेला योद्धा दुर्योधन आहे. त्यांनी लगेच जाऊन पांडवांना ही माहिती दिली. पांडव लगेच त्या पराभूत राजाचा शोध घेण्यासाठी निघाले. युधिष्ठिरानं दुर्योधनाला बाहेर येऊन राज्यासाठी अंतिम युद्ध करण्यास सांगितलं, पण दुर्योधनानं थोडा वेळ विश्रांतीसाठी मागितला आणि नंतर तो लढाईला तयार असल्याचं सांगितलं. सतत दबाव आल्यावर तो म्हणाला, मी एकटा सुद्धा उभा राहून सर्वांशी लढेन, आणि त्याने पांडवांना एकेकट्याने युद्ध करण्याचं आव्हान दिलं. युधिष्ठिरानं त्याच्या अटी मान्य करत सांगितलं की जर तू आमच्यापैकी कोणाला एकालाही पराभूत केलंस तर राज्य तुझं असेल. दुर्योधनाने पांडवांपैकी एकाच गदायुद्धासाठी आव्हान दिलं आणि हे निश्चित होताच तो पाण्याच्या गर्तेतून वर आला. युधिष्ठिरानं त्याला समारोपासाठी शस्त्र आणि कवच दिलं आणि भीमाला त्याच्याशी युद्ध करण्यासाठी पुढे केलं. सभोवती असलेले योद्धे हे अंतिम द्वंद्वयुद्ध पाहण्यासाठी बसले आणि बलराम, गोविंदाचा थोरला भाऊ, हा देखील संघर्ष पाहण्यासाठी तेथे आला. बलराम युद्धाच्या सुरुवातीला कोणत्याही पक्षाला मदत न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यानं तो ही लढाई पाहण्यासाठी आलेला होता. बलरामाने भीमाबरोबरच दुर्योधनालाही गदायुद्धाचं शिक्षण दिलं होतं. त्यामुळे बलरामाचा दुर्योधन हा शिष्य होता. त्यामुळे हे अंतिम युद्ध पाहण्यासाठी बलराम तिथे आले होते. युद्ध सुरू झाल्यावर केशवाने अर्जुनाला भीमानं घेतलेल्या शपथेची आठवण करून दिली. अर्जुनाने आपल्या डाव्या मांडीवर हात मारून भीमाला खूण दिली. हे समजताच भीमानं योग्य संधी पाहून जोरदार आक्रमण केलं. त्याने गदा जोरात फिरवत फेकली आणि दुर्योधनाने हवेत उडी मारली, पण भीमानं आपल्या गदेने त्याच्या मांडीवर घणाघाती प्रहार केला, ज्यामुळे त्या विदीर्ण झाल्या. त्यानंतर भीमानं जुन्या अन्यायांचा संताप व्यक्त करत त्याच्याकडे झेप घेतली आणि त्याला स्मरण करून दिलं की द्रौपदीचा अपमान कसा झाला होता. मग त्याने आपल्या डाव्या पायानं दुर्योधनाच्या मस्तकाला स्पर्श केला. हे पाहून सभोवती असलेल्या राजांनी तीव्र विरोध दर्शवला आणि युधिष्ठिरानं भीमाला समज दिली, दुर्योधन राजा आहे, तो तुझा नातेवाईक आहे. तो युद्धात पराभूत झाला असला तरी तू राजाच्या मस्तकावर पाय ठेवू नये. बलरामही हे पाहून संतापला, कारण गदा युद्धात कमरेखाली प्रहार निषिद्ध होता. त्याने भीमाला ठार मारण्यासाठी झेप घेतली, पण केशवानं त्याला मिठी मारली
आणि शांत शब्दात त्याचं मन समजावत भीमाच्या शपथेची आठवण करून दिली. त्यामुळे बलरामाने आपला रथ पुन्हा घेतला आणि तो तिथून निघून गेला. पांडव मात्र मनाने दुःखी राहिले. इथे भाग पहिला समाप्त होतो. धन्यवाद. थैंक यू सो मच मृणाल जी। और अर्चना जी का एक परिचय दे दूं संक्षिप्त सा। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी बड़ौदा से किया हुआ। वित्तीय संस्थान में वे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रही हैं। भारत और अमेरिका के स्कूल, कॉलेज और पेशेवर स्तर पर गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने नाटक किए हैं। FTI पुणे से कोर्स किया है, और काफ़ी सारे जो हमारे वृत्त चित्र होते हैं और कॉर्पोरेट फिल्म्स होती है उसमें उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी कार्य किया हुआ है। नेचुरोपैथी की वैकल्पिक चिकित्सा व्यावसायिक रूप से उन्होंने अध्ययन किया है, और वो प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में विनोबा जी द्वारा स्थापित गोत्री प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम बड़ौदा से, और ज्योति लॉज की सक्रिय सदस्य हैं। त्रिवेणी मीटिंग में भी सक्रिय रूप से कहती हैं। आपका स्वागत है। आप हिंदी में आज का पूर्ण कीजिए। मैं आपको PPT दिखाता हूँ। धन्यवाद। तो हम महाभारत की ओर बढ़ते हैं। पहले थोड़ा जान ले हमने कहाँ छोड़ा था। केशव और अर्जुन को मारने में अपनी असफलता से अश्वत्थामा काफी दुखी होकर मैदान छोड़कर भाग गया था। व्यास से मिलकर उन्होंने उसे केशव और अर्जुन की वास्तविक प्रकृति को जाना और उनके हथियार को वो क्यों मार नहीं सकते थे, और फिर उन्होंने रात के लिए एक सेना को बुलाया और तब वहां युद्ध बंद हुआ। इसके अंत में अर्जुन ने व्यास से पूछा कि वो कौन था जिसे उन्होंने अपने रथ के आगे जाते और उन लोगों को मारते हुए देखा था जो स्पष्ट रूप से मर चुके थे। तब व्यास ने उन्हें बताया कि वह स्वयं महादेव थे, और उन्होंने महेश्वर की महानता का अद्भुत वर्णन किया, और इसके साथ द्रोण पर्व यहाँ समाप्त हो गया। यहाँ ये कर्ता भाव से अकर्ता भाव का निर्देश करता है। अब हम चलते हैं कर्ण पर्व की ओर। कर्ण पर्व युद्ध के 16वें दिन कर्ण को सेनापति बनाया गया। उसने युद्ध किया, हराया, लेकिन कुंती की खातिर नकुल की जान बचाई और उसे पराजित और शर्मिंदा किया। भीम की प्रतिज्ञा को याद रखते हुए युधिष्ठिर ने दुर्योधन को भी बचा लिया। दिन का सम्मान फिर से अर्जुन के पास रहा, जिसने सभी को अपने सामने रखा था। उस रात कर्ण ने खुद को अगले दिन अर्जुन के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया, और उसने उस दिन अर्जुन को मारने या खुद उसके द्वारा मर जाने की कसम खाई। लेकिन उन्होंने मद्र देश के राजा शल्य को अपना सारथी बनाने के लिए कहा, ताकि शल्य अर्जुन के साथ समान शर्तों पर मुकाबला कर सकें। पहले तो शल्य इस अनुरोध को अपमान मानकर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें शांत किया और सहमति देने के लिए मना लिया, क्योंकि उन्हें स्वयं केशव के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता। इस प्रकार कर्ण ने अपने सारथी के रूप में शल्य के साथ युद्ध करने के लिए वह आगे बढ़ा। मगर दिन की शुरुआत सारथी और योद्धा के बीच झगड़े से हुई, क्योंकि शल्य ने कर्ण को उसके घमंड के लिए डांटा और अपने दुश्मन अर्जुन की प्रशंसा की। कर्ण ने युधिष्ठिर को तो हरा दिया, जिन्हें भागना पड़ा, लेकिन भीम ने अपने भाई की हार का बदला लिया और कर्ण को बेहोश कर दिया। उसके सारथी को उसके युद्ध से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जल्द ही लौटते हुए वह फिर से युद्ध में शामिल हो गया और वर्तमान में नकुल और सहदेव के साथ युधिष्ठिर से मुलाकात की। उन्होंने तीनों पर विजय प्राप्त की और फिर भीम द्वारा कठोर दबाव डाल जाने पर दुर्योधन को बचाने के लिए वह दौड़ पड़ा। इस बीच अश्वत्थामा को हराने के बाद अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तलाश की और युधिष्ठिर ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, मगर उनके बीच में कोई गलतफहमी हो गई। युधिष्ठिर जी को लगा कि शायद उन्होंने कर्ण को मार दिया, लेकिन सौभाग्य से श्री कृष्ण ने उसे सुलझाने में मदद की जो वहां मौजूद थे। अर्जुन और युधिष्ठिर फिर प्यार से गले मिले जब तूफान खत्म हो गया और अर्जुन युद्ध में वापस चले गए। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया और कर्ण के मारे जाने तक वापस न लौटने की कसम खाई। जैसे ही अर्जुन कर्ण के पास पहुंचे, दुशासन भीम के खिलाफ आगे बढ़ गया और एक भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया।
जो जल्दी ही समाप्त हो गया जब भीम ने अपने घृणित शत्रु के खिलाफ अपनी भयानक गदा फेंकी, और जैसे ही दुशासन जमीन पर गिर गया उसने पृथ्वी पर छलांग लगा दी, और द्रौपदी के अपमान को याद करते हुए भीम ने उसे अपनी तलवार छीन के दुशासन की छाती को चीर दिया और उसका कुछ खून भी पी लिया। फिर अपनी पत्नी के अपमान करने वाले का सिर काट दिया। ये भयानक कृत्य जिसने सभी देखने वालों में भय और आतंक पैदा कर दिया। एक शर्मनाक गलती की भयावह अगली कड़ी थी ये। और अब इस तरफ अर्जुन कर्ण के पास पहुंचे और अपने जीवन भर के दुश्मन पर हमला किया। इस युद्ध को देखने स्वयं देवता गण भी आए। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो कर्ण ने उसके बल को चकित कर दिया और अपने शत्रु के विरुद्ध भयंकर अग्निमय सांपों को भेजा। तभी एक शक्तिशाली सांप जिसकी मां खांडव के जंगल में जल जाने से मर गई थी, एक धधकते हुए बाण के रूप में कर्ण के तरकश में घुस गया। और जब कर्ण ने धनुष से वार किया तो वो हवा में उड़ गया। केशव ने अर्जुन के रथ को इस तरह दबाया तब वह पृथ्वी में एक हाथ की गहराई में धंस गया, जबकि जो घोड़े थे वो जमीन पर सपाट हो गए। और अग्निमय सर्पदंश ने इंद्र द्वारा अर्जुन को जो मुकुट दिया था वो उड़ गया और वो बाण उस पर लगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो अपने रथ के साथ डूब गए थे। इस प्रकार गोविंदा फिर से मृत्यु से बच गए। सांप फिर मारने के लिए कर्ण के पास वापस लौट आया, लेकिन कर्ण ने एक तीर को 2 बार चलाने से इनकार कर दिया, और तब फिर सांप ने खुद को ही अर्जुन पर फेंक दिया तो अर्जुन ने उसे अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने शत्रु पर जोर से दबाव डालते हुए अर्जुन ने उसे अपने हथियार गिरा दिए और फिर थोड़ी देर रुक गए। जबकि उसके पास हथियार कम थे, वह अपने शत्रु को मारने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन केशव ने उनसे आग्रह किया और कर्ण ने संभलते हुए अपना धनुष छीन लिया। एक आवाज तब सुनाई दी। कर्ण से कहा, पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निकल रही है। और कर्ण के रथ का बायां पहिया जमीन की गहराई तक घसने लगा। इस वक्त यहाँ 2 श्राप का महत्व बात याद आती है। एक, जो ब्राह्मण ने जिसके बछड़े को कर्ण ने लापरवाही से मार डाला था, एक बार उसे ये ब्राह्मण ने श्राप दिया था, कहा था कि युद्ध में उसकी मृत्यु समय आने पर उसी का रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। और दूसरा श्राप था जो परशुराम जी ने दिया था, जब परशुराम जी कर्ण के गोद में लेटे हुए थे और एक बिच्छू ने उनको डंक मारा तो कर्ण ने एक योद्धा होने के कारण उस घर में उसको पता नहीं था कि वो योद्धा के क्षत्रिय है, और उसने उसे बचाया अपने गुरु जी को। तो परशुराम को उन्होंने कहा था कि मैं अक्षत्रिय करूंगा, तो उनको लगा ये तो क्षत्रिय है, इसने मुझे झूठ बोला। तो उन्होंने उसको श्राप दिया था कि तू भले ही मेरा शिष्य हो मगर मौके के वक्त तुम मेरी सारी शिक्षा भूल जाओगे। तो ये दोनों श्राप का असर अब हुआ। तब उसे निराशा हुई, यानी कर्ण को निराशा हुई और वह धार्मिकता की प्रशंसा करने लगा। लेकिन तब भी वह उग्रता से लड़ता रहा जब तक कि उसे धसे हुए पहिए से वो अपने रथ से उछलकर वो बाहर निकलने आ नहीं गया। उसके गणों की ये प्रशंसा करते हुए और उसकी सुरक्षा के लिए उसने अपील की कि मुझे ये पहिया मुक्त करने तक प्रतीक्षा करने को कहा। तब वासुदेव यानी कृष्ण ने बहुत ही कटुता पूर्वक कहा कि अब तो उसने ये वक्त पर ये अच्छा किया कि अपने चरम समय में पुण्य को याद तो किया, जब पांडवों के साथ अपने सभी व्यवहारों में, भीम को जहर देने में, लाख के घर को जलाने में, द्रौपदी के अपमान में, ये वो सब सारी चीजें भूल गया था। और इस तरह से कर्ण को उन्होंने ताना मारा। तब कर्ण ने अपना पहिया छोड़कर अर्जुन के विरुद्ध अपने सर्वोत्तम हथियार चलाए और अब लड़खड़ाकर पीछे हटने की बारी अर्जुन की थी, जिससे कर्ण फिर से जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपना पहिया उठाने की फिर कोशिश की। तब अर्जुन ने स्वस्थ होकर अपने शत्रु पर फिर से वार किया और जिससे वो ध्वज कट गया, और सत्य और धर्म की दुहाई देकर चलाए गए इस बाण से उन्होंने कर्ण के सिर पर वार किया और कर्ण जैसा महान योद्धा गिर गया। सूर्य, यहाँ एबी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि सूर्यदेव के शरीर से एक उज्जवल प्रकाश निकला जो सूर्य और सूर्य किरणों के साथ मिलकर ऊपर चढ़ रहा था। अस्त होने के करीब कर्ण के शरीर को छूते हुए उसके जीवन रक्त से सना हुआ लग रहा था। आकाश लाल रंग से रंगा था। तब युद्ध बंद हो गया और कौरवों के शिविर में हाहाकार से गूंज
और पांडवों के शिविर में खुशी की गूंज थी। यहाँ अब शल्य पर्व शुरू होता है। शल्य पर्व 18वें दिन की शुरुआत शल्य को सेनापति के रूप में चुने जाने से हुई, और शल्य पर्व हमें उनके संक्षिप्त नेतृत्व के बारे में बताता है। युधिष्ठिर ने उससे कई बार युद्ध किया था और अन्य लोगों द्वारा उससे अलग कर दिया। अंत में युधिष्ठिर ने एक ज्वलंत हथियार छोड़ा जो शल्य की छाती को भेद गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब धृतराष्ट्र के केवल 2 पुत्र दुर्योधन और सुदर्श बचे थे। आखिरकार दुर्योधन अकेला और बिना किसी साथी के साथ था। एक झील की ओर भाग गया और उसकी गहराई में शरण ली। कुछ जादू से उन्हें पानी के द्वार खोल दिए और एक बुलबुल में छुप गया। कुरु पक्ष में केवल 3 रथ योद्धा थे, कृप, अश्वत्थामा और कृतवर्मन, जो वध से बच गए थे और उनकी सुरक्षा दुर्योधन के लिए अज्ञात थी। राजा की शरण के बारे में संजय से सुनकर तीनों ने रात होने के बाद उसकी तलाश की, यानी दुर्योधन की तलाश की, और उससे संघर्ष के फिर शुरू करने का आग्रह किया, लेकिन दुर्योधन ने थककर इनकार कर दिया। कुछ शिकारियों ने झील के पास आकर ये बातचीत सुनकर अनुमान लगाया कि ये दुर्योधन ही था जिसके पास झील में शरण लेने वाले लोग थे, और उन्होंने जाकर पांडु के पुत्रों को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत पराजित राजा को छिपने के स्थान की तलाश की। युधिष्ठिर ने उसे आगे आने और मुकुट के लिए युद्ध करने के लिए बुलाया, लेकिन दुर्योधन ने थोड़ा आराम करने के लिए कहा और फिर वह आगे आके युद्ध करेगा। फिर भी दबाव डाला गया। युद्ध में खड़ा होकर मैं अकेला हूं, मैं आप सभी का विरोध करूंगा, और उसने एक एक करके उसने लड़ाई की सबको चुनौतियां दी। युधिष्ठिर ने युद्ध के इस दाव पर सहमति व्यक्त हुए कहा, ठीक है, यदि वह उसमें किसी को भी एक को भी मार डाले तो राज्य उसका हो जाना चाहिए। तब दुर्योधन ने पांडु के पुत्रों में से एक को गदा लेकर उससे पैदल लड़ने की चुनौती दी, और इससे सहमत होकर वो पानी से ऊपर आ गया। युधिष्ठिर ने उसे कवच और उसकी कभी सभी जरूरतें भी प्रदान की और भीम को उसके प्रतिद्वंदी के रूप में आगे रखा। दर्शक संघर्ष देखने के लिए सेनानी चारों ओर बैठे रहे। गोविंद के बड़े भाई बलराम 2 योद्धाओं के बीच आखिर द्वंद देखने आए, जो उनके जीवन भर की प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने के लिए था। यहाँ बलराम के ये दोनों ही शिष्य थे, और बलराम खुद एक बहुत ही गदा युद्ध में बहुत ही प्रवीण थे। युद्ध के किसी पक्ष की मदद करने से इनकार करने के बाद बलराम तीर्थ यात्रा पर निकले थे। जैसे ही वे लड़ते, केशव ने अर्जुन को भीम की प्रतिज्ञा की याद दिलाई, और अर्जुन ने भीम को देखते ही उसकी बाईं जांघ पर प्रहार किया। भीम ने संकेत समझ लिया और मौका देख के अपने शत्रु के ऊपर हमला करने के लिए अपनी गदा घुमाते हुए उस पर झटके। भीम के लक्ष्य धोखा देने के लिए दुर्योधन ने हवा में छलांग लगाई, और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, भीम ने अपनी गदा कुरु राजा की जांघों पर फेंक दी, जिसके प्रहार से उनकी जांघें टूट गई। तब गलत की पुरानी यादों से पागल भीम अपने असहाय प्रतिपक्षी के पास पहुंचे और अपमानित द्रौपदी को याद करने को आग्रह करते हुए उन्होंने अपने बाएं पैर से उसके गिरे हुए सिर को छुआ। ये देख के आसपास के राजाओं ने अस्वीकृति के संकेत दिखाए, और युधिष्ठिर ने अपने भाई को डांटा। दुर्योधन एक राजा है, वह अपना रिश्तेदार है, वह गिर गया है। हे भीम, किसी राजा और रिश्तेदार को अपने पैर से मत छुओ। इसके अलावा बलराम भीम द्वारा किए घृणित प्रहार से बहुत क्रोधित थे। गदा से लड़ने वालों को कमर के नीचे वार करने की अनुमति नहीं थी, और वह भीम को मारने के लिए उस पर झपटे। जब केशव ने उनके चारों ओर अपनी भुजाएं फैलाई और कमोल शब्दों में उन्हें उनके क्रोध को शांत किया, उन्हें भीम की यह प्रतिज्ञा याद दिलाई, तब बलराम अपने रथ पर बैठे और पांडु के पुत्रों को दुखी छोड़कर चले गए। यहाँ भाग 1 का समापन होता है। थैंक यू अर्चना जी। यस शिखर जी, यू कैन गो अहेड। So after that, as the Pandavas reached back their camp victorious after, Bhim defeated Duryodhan. So, but one thing that Krishna told Arjuna, that first to remove the Gandhi and his quivers from his car and descend from the chariot before Krishna. And then after he got down, then Krishna descended, and then the Lord Hanuman from the banner disappeared, and immediately the whole chariot actually burned.
into the car, reins, steed's yoke, and shaft fell into ashes. And seeing this, Arjuna was very amazed that what happened suddenly. So Krishna replied that that car, that chariot Arjuna had before been consumed by diverse kinds of weapons, but it was only because I sat on it during the battle, it did not fall into pieces. So truly, had Keshava showed himself throughout the deadly battle, the friend and protector of not only Arjuna but Pandavas, also in the side of Dharma. Where Krishna is, there is victory. Then in the field, Yudishthira, afraid of Gandhari's anger, prayed Keshav to go to Hastinapur and break the news to Gandhari of her son's death. And upon hearing Keshav's words, Gandhari became steady but burst again into tears. Keshav knew the evil plan of Ashwatthama as Duryodhan made him the general, as we came to know later, and he immediately took leave of Dhritarashtra and Gandhari and drove back to the camp. And meanwhile, Duryodhan install Ashwathama as general, and with the ceremony, Shalya Parva ends. Now starts the Sauptik Parva, in which Ashwathama takes vengeance of his father's death, and although the Kripacharya was telling him not to do such an unethical thing, but he entered the camp and night slaughtered Drishtadhyum and the sons of Draupadi. But the Pandavas were saved because they were not there, and Satyaki and Keshav himself. This news was brought a lot of sorrow to Draupadi and Pandavas on one side, but satisfaction to agonizing Duryodhan, who breathed his last. And Draupadi, on hearing this news, took a vow that if Ashwatthama were not slain and the gem on his head born with him brought to her, she will end her own life. So the Pandavas went along with Keshav in the search of Ashwatthama. And on facing each other, Ashwathama was still enraged because he wanted to take revenge of his father's death, and the Pandavas also. So both of them, Ashwathama took a blade of grass, turned it into by mantras, the Brahmastra, and also Arjuna, quickly obeying Keshava, and hurled at him the same weapon. Then Narad and Vyas came in between, tried to pacify and told them to take back these weapons. Arjun, who was submissive and obedient to his superiors, withdrew his weapon, but Ashwathama was unable to withdraw his weapon. But desirous of showing reverence to the rishis, he turned it to slay only the unborn child of Subhadra, who was Parikshit, and gave the Subhadra, and it went to Subhadra, and it killed the fetus in the womb. But on this, Krishna became very, very angry, and he accursed Ashwathama that he will, for his wicked act, roam lonely over the earth for 3,000 years without a companion and without being able to talk with anyone. And he took out that gem on his forehead, and he said from there, it will be an unhealed wound that the blood will keep coming out. But later on, Keshav also explained that Ashwathama had slain the survivors in the battle by the will of Mahadev. Basically, Mahadev, not that Mahadev or some deity wanted to have them killed, but basically, as we also can connect to all those children who the wife of Shantanu, Ganga, drowned in the river. They were Vasus who were there for a particular time, and they came and they had their time and they went back. So death is more like a portal, not something to be looked at in a bad sense. So whoever has their time, completed one way or the other, some medium comes and it happens like that. So that's what Keshav explained them. Still, the thing was not over. After all this, after the Pandavas went to Hastinapur, met Dhritarashtra, and he gently embraced Yudishthira. But when Bhim was approaching, the anger inside Dhritarashtra was up, and Krishna saw this. So instead of Bhim embracing him, he told Bhim to push a very human size image
statue of made of metal, and he put that near to Dhritarashtra, and Dhritarashtra embraced it. But by the grip of Dhritarashtra, he was so much into anger that he broke that statue into pieces, bruising his own chest. And thus the king, but still after doing that, he thought he had killed Bhim, so he was very sorry. But then Keshav said, no, Bhim is still alive. And then he confessed his own faults, that he fell away from the righteousness due to parental affection. And then he embraced the sons of Pandu and blessed them as his own. Still, although the Gandhari, when she came to know first time, she was stable, but now again he came up to her, she was also full of wrath, and she cursed Krishna that since you were indifferent to the Kauravas and Pandavas while they killed each other, O Govinda, you shall be the slayer of thy own kinsmen, and your own family will fight among each other and they will die. And that's how it happens when we read the history. And also the mighty Lord of life and death, knowing all things beforehand, answered in a faint, sad smile, there is none in the world save myself that is capable of exterminating the Vrishnis, that is the Yadvas. I know it well, I am endeavoring to bring it about, and in this curse, you have helped me in the accomplishment of that task. So surely do our wildest follies, but work towards the fulfillment of the divine purposes. So actually, if we look like this, sometimes we say, oh, everything was going good, but somebody did a mistake and the thing changed. So actually, even a mistake has a place in the whole divine plan. And that mistake would not have happened if it was not there to teach someone something and to change the consequence of the plan or the whole situation. Then later on, when the vast number of people mourned gathered together on Ganga's banks to offer oblations, there Kunti revealed that Karna was also her son and the elder brother of the Pandavas. So Yudishthira burst into loud lamentation, and he bewailed the dead hero and said that if he had known this, the whole terrible carnage might have been prevented. And it is said that at that time he told, or rather he cursed Kunti or the female gender, that they could not keep anything inside. So because Kunti kept it like a secret, which led it to the whole carnage, although that was not the main reason. But that's how it was explained there. Then Yudhishthira was feeling very depressed after seeing so much of carnage. So Narad and Rishis came, they explained to Yudhishthira why Karna was cursed and why it happened what happened. But still, he declared that he will give the kingdom to Arjun and will become an ascetic, but only after Krishna and various rishis convinced him to take up the crown, which he agreed to do as the servant of Dhritarashtra. Then only he could go ahead. On. Still, one of the Rakshas Charvak was remaining, who tried to create disruption by pretending to be a Brahmana, but fell dead upon the group chanting by the Brahmanas of the mantra. So that was the last obstacle that was clear in the kingdom of Yudhishthira. But before that, Yudhishthira then appointed officers to the kingdom to rule it righteously. He arranged for the Shraddha rites to be duly performed for so many people who have died in this battle, erected house, arranged food and water, excavated tanks in the names of dead, provided tenderly for the widows and the mothers of the slain, gave alms to the poor, and then praising Sri Krishna in a noble hymn, he told his brothers to rest and the earth too had peace. Then one day, then he saw Krishna in meditation and he asked, what is the need of you for you to meditate? And then Krishna answered smilingly that Bhishma is thinking of me. That's why my mind also was concentrated on him.
And he advised Yudhishthira to go and learn about duty from Bhishma before he passes away, because with his disappearance from earth, every kind of knowledge will disappear with him. And then Krishna accompanied Yudhishthira, and upon reaching Bhishma, he was on the bed of arrows. He asked Bhishma to instruct Yudhishthira, and thus dispelling the grief that Yudhishthira is feeling for slaying so many of relatives and other people. To this, Bhishma said that how can he say anything when Krishna himself is there and he is barely alive, suffering from pain, injuries, thirst, hunger, and his knowledge is clouded. So Krishna blessed him and then left with others, only to return the next morning with Pandavas. Then Bhishma said that due to the grace of God, all suffering had left him and all knowledge had come to him by the same favor. And the intention behind this being that the fame of his devotee should spread over the world, that Krishna, although he knows everything, he could have given the knowledge to Yudhishthira, but he wanted Bhishma to have that name in the history that he gave that those instructions to Yudhishthira. That's why he is making him the medium. And like an eligible disciple, Yudhishthira asked him about the duty, and then Bhishma spoke calmly, telling him that it was the duty of the Kshatriya to slay in the battle even his guru if he engaged in an unjust battle with him. So trying to bring Yudhishthira out of that feeling of guilt or sense of suffering that he did so many things. Then first Yudhishthira, he told Yudhishthira that he should know of the kingly duties. And on this theme, Bhim spoke at length. We cannot cover everything here due to the time limitation. And he gave us the old ideal of kingship, of royalty as it should be, the minister as the minister of the gods on earth. And in the first place, he says what is very important, if we see that the king must be religious. If we look at it in the present scenario, we can say that the king or the ruler or whoever is at the helm of the power must be spiritual, because today the world religion has become so divisive that is by religious means the person is, ethical, moral, and working selflessly for the good of others. So that is the first thing. And next, he should show promptitude and exertion. And in failure, he should redouble his efforts. This is the high duty of kings. He must be devoted to truth and administer justice. And this applies to whoever, male or female, whoever is the head of the kingdom or government. Being neither too indulgent nor too severe, he must love his people as the mother loves the child of her womb, seeming their good as the mother the good of the child. And to benefit his people, he must sacrifice his own pleasure and never lose fortitude, being ever ready in action. The happiness of their subjects, observance of truth, and the sincerity of behavior are the eternal duty of kings. He should be dignified, self-controlled, affable, reverential to the aged, splendid, and liberal. His subjects should live in his kingdom like the children live in the house of their parents. To protect his subjects is the cream of kingly duties, and the hero who acts is superior to the hero who talks. But then Yudhishthira asked something very interesting. He said, but why only one person should rule? Then Bhishma answered, at first there was no king. All people were righteously protecting one another. But as the cunning mind came into being, the covetous kingship became necessary for protection. And then the gods gave the celestial humans to be the rulers, to set off certain standards. Later, men of great merit were reborn on earth as kings, and obedience was gladly rendered to one seen to be superior. Hence was it said that there was no difference between the god and king. And this was, I think, the
premise of the thing that king was supposed to be the representative of God. And not only here in India, I mean, in other cultures, if we saw in the earlier times, the king was uh, at the level of the God, and his words were the final words. So from there, it might have started. Thank you. Thank you, Shikhar ji. You're not well, still you carried on. Yes, Mrinal ji, please go ahead. थँक्यू शिखरजी, थँक्यू तरलजी. पांडव जेव्हा आपल्या छावणीत परतले तेव्हा केशवाने अर्जुनाला सांगितलं की त्याने गांडीव धनुष्य आणि बाणांचे भाते आपल्या रथातून काढून टाकावेत आणि आधी खाली उतरावं. अर्जुन खाली उतरल्यावर केशव स्वतः खाली आले आणि मग रथाच्या पताकेत असलेले हनुमान अचानक अदृश्य झाले आणि पाहता पाहता रथ, घोडे, लगाम, चाकं आणि संपूर्ण रथ अग्नीने भस्मसात झाला. अर्जुन या अद्भुत घटनेनं अचंबित झाला आणि त्याने गोविंदाला याचं कारण विचारलं. तेव्हा गोविंद म्हणाले, हा रथ अर्जुना आधीच असंख्य अस्त्रांनी भस्म झाला होता. युद्धाच्या वेळी मी त्यावर बसल्यामुळे तो तुटला नाही, पण आता माझा प्रभाव काढला गेला आणि तो नष्ट झाला. अशा प्रकारे त्या महायुद्धात श्रीकृष्णानं अर्जुनाचा खरा मित्र आणि रक्षक म्हणून आपली भूमिका सिद्ध केली. आणि पुन्हा एकदा हे सत्य सिद्ध झालं की जिथे कृष्ण असतो तिथेच विजय असतो. आता सौप्तिक पर्वाला सुरुवात झाली. सौप्तिक पर्वात अश्वत्थामाने आपल्या वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घेतल्याची कथा सांगितली आहे. कृपाचार्यांनी त्याला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण मध्यरात्री त्याने पांडवांच्या छावणीमध्ये प्रवेश करत धृष्टद्युम्न आणि द्रौपदीच्या पुत्रांची हत्या केली. फक्त 5 पांडव, सात्यकी आणि श्रीकृष्ण वाचले कारण ते छावणीत नव्हते. ही बातमी ऐकून मरणासन्न दुर्योधनाला समाधान मिळाले आणि त्याने अखेरचा श्वास घेतला. द्रौपदीने शपथ घेतली की जर अश्वत्थामाला मारले नाही आणि त्याच्या डोक्यावरचा अमूल्य मणी आणला नाही तर ती आपले प्राण सोडेल. भीम तातडीने निघाला. त्याला नंतर श्रीकृष्ण, अर्जुन आणि युधिष्ठिरही सामील झाले. अश्वत्थामा आणि अर्जुन समोरासमोर आले. अश्वत्थामाने एक गवताची काडी मंत्राने महाशस्त्रात रूपांतरित केली, तर अर्जुनाने द्रोणांकडून शिकलेले त्याच शस्त्राचे प्रत्युत्तर दिले. त्याच वेळी नारद आणि व्यास यांनी दोन्ही अस्त्रांना रोखले आणि अर्जुनाने आदराने आपले अस्त्र मागे घेतले. परंतु अश्वत्थामाला तसे करता आले नाही, म्हणून त्याने ते फक्त अभिमन्यू पुत्राच्या हत्येसाठी वळवले. श्रीकृष्णाने त्या बाळाला पुन्हा जीव दिला आणि तोच पांडवांचा वारस परीक्षित झाला. मात्र अश्वत्थामाला त्यांनी शाप दिला की तो 3000 वर्षे पृथ्वीवर एकटा कपाळावरची भळभळती जखम घेऊन कोणाशीही न बोलता भटकत फिरेल. नंतर पांडव धृतराष्ट्राला भेटायला गेले. त्याने युधिष्ठिराला प्रेमाने आलिंगन दिले, पण जेव्हा भीम जवळ आला तेव्हा त्याच्या मनात रोष उफाळला आणि त्याने भीमाला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. पण श्रीकृष्णाने वेळीच सावध राहून त्याच्या जागी एक लोखंडी मूर्ती ठेवली. धृतराष्ट्राच्या महाकठीण मिठीत ती मूर्ती चिरडली गेली आणि तो स्वतःही रक्तबंबाळ होऊन कोसळला. गांधारीने श्रीकृष्णावरही राग काढला आणि शाप दिला की तू दोन्ही पक्षांमध्ये असतानाही तटस्थ राहिलास, म्हणून तू स्वतःच्या कुलाचा संहार करशील आणि 36 वर्षांनी एकाकी मरण पावशील. त्यावर हलकेसे हसून श्रीकृष्ण उत्तरले, माझ्याशिवाय कोणीही यादवांचा नाश करू शकत नाही. मी हे चांगलेच जाणतो आणि ते घडवून आणण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. हे शाप उच्चारून, हे उत्तम व्रतधारिणी, तू माझ्या कार्यसिद्धीला मदत केली आहेस. खरं तर आपली सर्वात अयोग्य कृती ही दैवी योजनेच्या पूर्ततेसाठी कार्य करत असतात. गंगेच्या तीरावर असंख्य शोकाकुल लोक जमले होते, जे युद्धात मृत झालेल्या वीरांना अर्पण करण्यासाठी आले होते. तेथे दुःखाने व्याकुळ झालेल्या कुंतीने पांडवांना एक सत्य उघड केले. सूर्यदेवाच्या कृपेने जन्मलेला कर्ण तिचा पुत्र होता आणि त्यामुळे तो त्यांचा थोरला भाऊ होता. हे ऐकताच 5ही भाऊ मोठ्याने हंबरडा फोडून रडू लागले. युधिष्ठिराने शोक करत उद्गार काढले की जर हे पूर्वीच ज्ञात असते तर हा भीषण नरसंहार टाळता आला असता. त्यावेळी नारद व इतर ऋषी तेथे आले आणि त्यांनी युधिष्ठिराला समजावले की दैवी योजनेनुसारच कर्णावर अनेक वेळा शाप आले होते, त्यामुळे जे काही घडले ते नियतीच्या इच्छेनेच घडले. तरीही युधिष्ठिराच्या मनात क्लेश शिल्लक राहिला.
त्याने राज्य सोडून संन्यास धारण करण्याचा निश्चय जाहीर केला आणि अर्जुनाला राज्य अर्पण करणार असल्याचे सांगितले. श्रीकृष्ण तसेच अनेक ऋषींनी त्याला समजावून सांगितले आणि अखेरीस युधिष्ठिराने राजा होण्यास संमती दिली. परंतु तो धृतराष्ट्राचा सेवक म्हणून राज्य करील असे जाहीर केले. त्याच वेळी एकमेव उरलेला राक्षस चार्वाक, जो ब्राह्मण असल्याचे भासवून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होता, तो ब्राह्मणांच्या हुम मंत्रोच्चाराने तात्काळ मृत झाला. त्यानंतर युधिष्ठिराने राज्यासाठी योग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. श्राद्धविधींचे आयोजन केले. मृतांच्या स्मरणार्थ निवासस्थाने बांधली. अन्न पाण्याची सोय केली. तलाव खणले. मृतांच्या विधवा आणि मातांचे पालन पोषण सुनिश्चित केले. गरिबांना दान दिले. त्यानंतर श्रीकृष्णाची स्तुती करत आपल्या भावांना विश्रांती घेण्यास सांगितले आणि अखेर पृथ्वीवरही शांती प्रस्थापित झाली. आता अध्याय 8 महान उपदेशाचा. एके दिवशी श्रीकृष्ण ध्यानस्थ असताना युधिष्ठिराने त्यांना विचारले की त्यांना ध्यान करण्याची काय आवश्यकता आहे. कृष्ण स्मितहास्य करत म्हणाले, भीष्म माझा विचार करत आहेत, त्यामुळे माझे मन देखील त्यांच्यावर केंद्रित झाले आहे. त्यानंतर श्रीकृष्णाने युधिष्ठिराला भीष्मांकडून धर्माबद्दल शिकण्याचा सल्ला दिला, कारण भीष्मांच्या पृथ्वीवरून निघून गेल्यावर ज्ञानाचा अखंड स्रोत लोप पावेल. श्रीकृष्णाबरोबर युधिष्ठिर व इतर पांडव भीष्मांकडे गेले, जे शरशय्येवर पडलेले होते. श्रीकृष्णाने भीष्मांना विनंती केली की युधिष्ठिराला धर्माचे ज्ञान द्यावे, जेणेकरून तो आपल्या नातेवाईकांच्या मृत्यूबद्दल होणाऱ्या शोकातून बाहेर पडू शकेल. भीष्म म्हणाले की श्रीकृष्ण स्वतः येथे असताना मी काय बोलू. शिवाय मी अतिवेदनेत आहे, जखमी आहे, तहान भुकेने त्रस्त आहे आणि त्यामुळे माझे ज्ञान मलिन झाले आहे. हे ऐकताच श्रीकृष्ण भीष्मांना आशीर्वाद देऊन निघून गेले. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते पुन्हा आले आणि पांडव राजे व ऋषींसह भीष्मांचे उपदेश ऐकण्यासाठी हजर झाले. भीष्माने कृतज्ञतेने घोषित केले की भगवंताच्या कृपेने माझी सर्व वेदना नाहीशी झाली आहे आणि त्यांच्या इच्छेमुळेच मला सर्व ज्ञान प्राप्त झाले आहे. यामागील हेतू असा होता की भीष्मांच्या कीर्तीचा विस्तार संपूर्ण जगात व्हावा आणि पृथ्वीवर त्यांचे नाव अजरामर व्हावे. जेव्हा युधिष्ठिराने त्यांच्याकडे धर्माचे ज्ञान मागितले, तेव्हा भीष्मांनी शांतपणे सांगितले की क्षत्रियाचा धर्म हा आहे की जर त्याच्यासमोर अन्यायाने युद्ध करणारे गुरुदेवही आले तरी त्याने युद्धात त्यांचा पराभव करावा आणि युद्ध धर्माचे पालन करावे. सर्वप्रथम युधिष्ठिराला राजधर्म समजून घ्यायचा होता आणि या विषयावर भीष्मांनी विस्ताराने भाष्य केले. त्यांनी आदर्श राजसत्तेचे वर्णन केले, जशी ती असावी. एक दैवी कार्य करणारा राजा जो पृथ्वीवरील देवतांचा प्रतिनिधी आहे. सर्वप्रथम राजा धार्मिक असला पाहिजे आणि त्यानंतर त्याने तत्परता आणि परिश्रम राबवले पाहिजेत. अपयश आल्यास त्याने आपले प्रयत्न दुप्पट करावेत. हेच राजधर्माचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. राजा सत्याचा उपासक असावा आणि न्यायनिवाडा करावा. तो ना फार सौम्य असावा ना फार कठोर. त्याने आपल्या जनतेवर मातेसारखे प्रेम केले पाहिजे, जसे की माता आपल्या गर्भातील बाळाची काळजी घेते. राज्याच्या हितासाठी त्याने स्वतःच्या सुखाचा त्याग करावा आणि कधीही धैर्य गमावू नये. नेहमी कर्मशील राहावे. जनतेचे सुख, सत्याचे पालन आणि सत्यनिष्ठ वर्णन हे राजांचे सनातन कर्तव्य आहे. राजा सन्माननीय, संयमी, विनम्र, वृद्धांचा आदर करणारा, भव्य आणि दानशूर असावा. त्याच्या राज्यातील प्रजेने पित्याच्या घरातील पुत्रांप्रमाणे राहावे. आपल्या प्रजेला संरक्षित करणे हे राजधर्माचे सर्वोच्च तत्व आहे. जो केवळ बोलतो त्यापेक्षा जो कृती करतो तो अधिक श्रेष्ठ आहे. परंतु एकाच व्यक्तीने का राज्य करावे असे युधिष्ठिराने विचारले. प्रारंभी भीष्म म्हणाले, पहिल्यांदा पृथ्वीवर कोणीही राजा नव्हता. सर्व लोक एकमेकांचे संरक्षण करत होते. परंतु जसजसे लोभ वाढू लागले तसतसे संरक्षणासाठी राजसत्तेची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यानंतर देवांनी दैवी पुरुषांना राज्यकारभारासाठी नियुक्त केले. नंतर पुण्यवान पुरुष पृथ्वीवर राजे म्हणून जन्म घेऊ लागले आणि जे श्रेष्ठ होते त्यांना लोक आनंदाने अधिपती मानू लागले. म्हणूनच असे सांगितले गेले की राजा आणि देवता यांच्यात काहीही फरक नाही. राजा हा विष्णूचाच अवतार आहे असे सांगितले जाते. इथे आपलं आजचं दुसरं सत्र समाप्त होत आहे. धन्यवाद. Yes, Archana ji, you can go ahead. थैंक यू मृणाल जी, थैंक यू ट्रल जी। अब जैसे ही पांडव अपने शिविर में पहुंचे, केशव ने अर्जुन को अपने रथ से गांडीव और अपने तरकश को उतारने को और उनके सामने ही नीचे उतरने को कहा। तब
जब केशव स्वयं नीचे उतरे और तब ध्वजा पर के हनुमान जी गायब हो गए, और देखो क्षण भर में रथ, लगाम, घोड़े, जुआ, बाण सभी राख हो गए। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने इस अजीब घटना का कारण पूछा, तो गोविंद ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ये रथ पहले ही विभिन्न प्रकार के हथियारों से भस्म हो चुका था। युद्ध के समय में मैं उस पर बैठा था, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। ये शत्रुओं को भस्म करने वाले के मुंह से निकला। वास्तव में केशव ने उस घातक युद्ध के दौरान खुद को अर्जुन का मित्र और रक्षक दिखाया था, और फिर एक बार ये साबित कर दिया था कि जहां कृष्ण है वहां जीत है। तब गांधारी के क्रोध से डरकर युधिष्ठिर ने केशव से हस्तिनापुर जाने और गांधारी को उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार देने की प्रार्थना की। केशव की बात सुनकर गांधारी स्तब्ध हो गई, लेकिन फिर फूट फूट कर रोने लगी। केशव को अश्वत्थामा की दुष्ट योजना का पता चल चुका था, और वह धृतराष्ट्र और गांधारी से विदा लेकर शिविर में वापस चले गए। इस बीच दुर्योधन मरणासन अवस्था में था। उसने कृप को अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में स्थापित करने का आदेश दिया, और इस समारोह के साथ शल्य पर्व समाप्त हो गया। अब आता है सौप्तिकता पर्व। संक्षिप्त सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की कहानी है। कृप ने उसे मना लिया था कि लेकिन वह मना किया था, फिर भी अश्वत्थामा रात के अंधेरे में शिविर में घुस गया। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। जब तक कि कोई जीवित नहीं बचा, पांडु के 5 पुत्र और सात्यकी और स्वयं केशव को छोड़कर जो वो लोग वहां नहीं थे वो बच गए। इस समाचार से दुखी दुर्योधन को थोड़ी संतुष्टि की अंतिम किरण मिली और उसने अंतिम सांस ली। ये समाचार सुनकर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि यदि अश्वत्थामा का वध नहीं किया गया और उसके सिर पर लगी मणि उसके पास नहीं आई, तो वे अपना जीवन समाप्त कर देगी। भीम आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद केशव, अर्जुन और युधिष्ठिर भी इसमें शामिल हो गए। एक दूसरे का सामना करने पर अश्वत्थामा ने घास का एक तिनका उठाया और उसे मंत्रों द्वारा एक महान दिव्य हथियार में बदल दिया, जबकि अर्जुन ने तुरंत केशव की बात मानते हुए उसके खिलाफ वही दिव्य हथियार फेंका जिसका उपयोग उन्होंने स्वयं द्रोण से सीखा था। तब नारद और व्यास ने खुद को इन हथियारों के बीच फेंक दिया और उन्हें नियंत्रित कर लिया, और अर्जुन अपने सभी वरिष्ठों के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी के ने श्रद्धा पूर्वक अपने हथियार वापस ले लिए। एक ऐसा कारनामा जो हृदय में पवित्र लोगों के अलावा कोई नहीं कर सकता था। अश्वत्थामा हालांकि उसे वापस लेने में असमर्थ था, लेकिन ऋषियों के प्रति श्रद्धा दिखाने की इच्छा से उसने उसे केवल सुभद्रा के अजन्मे बच्चे जो परीक्षित को मारने के में बदल दिया और अपने साथ पैदा हुई मणि को अपने सिर से दे दिया। बच्चे के वध के बावजूद केशव ने घोषणा की कि उन्हें ये बच्चे को जीवित रहना चाहिए, स्वयं पुनर्जीवित होना चाहिए और परीक्षित के रूप में पांडवों के राज्य पर शासन करना चाहिए। दूसरी ओर अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अपने दुष्ट कृत्य के कारण 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर बिना किसी साथी के और बिना किसी से बात किए अकेला घूमते रहेगा। मणि भी ले लिया और खून निकलते हुए जख्म के साथ वो घूमता रहेगा। बाद में केशव ने बताया कि अश्वत्थामा ने महादेव की इच्छा से युद्ध में बचे लोगों को संहार किया था। युद्ध के बाद जब पांडव धृतराष्ट्र से मिले तो उन्होंने धीरे से युधिष्ठिर को गले से लगा लिया, लेकिन जब भीम आ रहे थे तो अंधे राजा का क्रोध भड़क उठा और वह भीम की गला घोटने जा रहे थे। जब उन्होंने भीम के चारों ओर से अपनी बाहें फैला दी, तभी हमेशा सतर्क रहने वाले केशव ने भीम की जगह एक बड़ी कांसे की मूर्ति पर जोर रख दी और धृतराष्ट्र ने उस पर जोर से प्रहार किया, जो धृतराष्ट्र की पकड़ से कुचल गया और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। उनकी खुद की छाती मजबूत आलिंगन से घायल हो चुकी थी। तब राजा को पश्चाताप हुआ और अपना क्रोध समाप्त होता देख केशव ने सारी स्थिति बताई। राजा ने अपने दोषों को स्वीकार करते हुए कहा कि वह माता पिता के स्नेह के कारण धर्म से विमुख हो गया है। फिर उन्होंने पांडु के पुत्रों को गले लगाया और उन्हें अपना मानकर आशीर्वाद दिया। हालांकि गांधारी को पहले श्री कृष्ण ने सांत्वना दी थी, लेकिन उनका गुस्सा भी भड़क उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, चूंकि तुम कौरवों और पांडवों के प्रति उदासीन थे जब वे एक दूसरे को मार रहे थे, इसलिए हे गोविंद,
तुम अपने ही रिश्तेदारों के हत्यारे बनोगे। इसके बाद 36वें वर्ष में मधु के हत्यारे तुम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और बेटों का वध करने के बाद जंगल में शर्मनाक तरीके से नष्ट हो जाओगे। जीवन और मृत्यु के शक्तिशाली भगवान ने सब कुछ पहले से जानते हुए फीकी उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है जो ये वृष्णियों, ये यादवों को नष्ट करने में सक्षम है। मुझे ये अच्छे से पता है, मैं इसे लाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। इस श्राप की निंदा करके उत्तम व्रतों वाले आपने इस कार्य की सिद्धि में मेरी सहायता की है, तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से हम बेतहाशा मूर्खताएं करते हैं, लेकिन ये मूर्खताएं दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही काम करती हैं। गंगा के तट पर मारे गए योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शोक मनाने वालों की एक विशाल भीड़ एकत्री हुई, और वहां कुंती ने दुख से टूटते हुए पांडु के पुत्रों को बताया कि कर्ण का जन्म उनसे हुआ था जो सूर्य देव की संतान थे, और इस प्रकार वह उनका बड़ा भाई था। तब पांचों भाई जोर जोर से विलाप करने लगे, और युधिष्ठिर ने मृत नायक के लिए विलाप करते हुए कहा कि यदि यह ज्ञात होता तो संपूर्ण भयानक नरसंहार रोका जा सकता था। कुंती को तभी श्राप भी मिला कि तब से यह स्त्री कभी भी अपनी बात छुपा नहीं सकेगी। जब नारद और अन्य ऋषि वहां आए तो उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि कर्ण को कई बार श्राप क्यों दिया गया था, और उन्होंने सांत्वना दी कि जो कुछ भी हुआ वह दैवीय योजना के अनुसार था। लेकिन फिर भी उन्होंने जोश के साथ घोषणा की कि वह अर्जुन को राज्य सौंपकर सन्यासी जीवन अपनाएंगे। कृष्ण के बाद विभिन्न ऋषियों ने उन्हें मुकुट लेने के लिए मना लिया, जिसे वह धृतराष्ट्र के सेवक के रूप में करने के लिए सहमत हो गए। और एक शेष राक्षक चार्वाक ने ब्राह्मण होने का नाटक करके कुछ व्यवधान पैदा करने की भी कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा समूह में हूम का मंत्रोच्चार करने पर वह मर गया। तब युधिष्ठिर ने राज्य पर धर्म पूर्वक शासन करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया, विधिवत श्राद्ध कर्म किए, घर बनवाए, भोजन और पानी की व्यवस्था की, मृतकों के नाम पर तालाब खुदवाए, मारे गए लोगों की विधवा और माताओं के लिए स्नेह पूर्वक भोजन कराया, गरीबों को दान किया, और फिर एक महान भजन में श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपने भाइयों को आराम करने के लिए कहा, और पृथ्वी पर भी अभी शांति थी। अब यहाँ अध्याय 8वां महान उपदेश शुरू होता है, महान उपदेश उसका शुरू होता है। यहाँ कृष्ण को ध्यान में देखकर युधिष्ठिर ने उनसे ध्यान करने की आवश्यकता पूछी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भीष्म अभी मेरे बारे में सोच रहे हैं, अतः मेरा मन भी उन पर केंद्रित है। कृष्ण ने मरने से पहले युधिष्ठिर को सलाह दी कि कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि मरने से पहले वे जाकर भीष्म से कर्तव्य के बारे में सीखे, क्योंकि उनकी पृथ्वी से गायब होने के बाद ही हर तरह का ज्ञान गायब हो जाएगा। कृष्ण युधिष्ठिर के साथ गए, और जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे, वहां पहुंचकर कृष्ण ने उनसे अनुरोध किया कि वे युधिष्ठिर को कर्तव्य के बारे में निर्देश दें, जिससे उन्हें अपने रिश्तेदारों की हत्या का दुख दूर हो सके। इस पर भीष्म ने उत्तर दिया कि जब कृष्ण स्वयं वहां है तो वह कुछ कैसे कह सकते हैं, और ये भी बहुत मुश्किल से जीवित है। अब उनको दर्द, चोट, प्यास, भूख से वो पीड़ित है, और उनका ध्यान भी धुंधला हो गया है। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अन्य लोगों के साथ चले गए। अगली सुबह पांडवों, शेष राजाओं और ऋषियों के साथ भीष्म को सुनने के लिए लौटे, जिन्होंने कृतज्ञता पूर्वक घोषणा की कि भगवान की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो गए हैं, और सारा ज्ञान भी उसी कृपा से उनके पास आया था। इसके पीछे मंशा ये है कि उनके भक्त की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैले, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वह प्रसिद्धि से जीवित रहेंगे। और जब युधिष्ठिर जैसे योग्य शिष्य ने प्रश्न पूछा तो भीष्म ने शांति से बात करते हुए कहा कि यह क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु को भी युद्ध में मार डाले, यदि वो गुरु उनके साथ एक अन्यायपूर्ण युद्ध में शामिल हो। सबसे पहले युधिष्ठिर को राजसी कर्तव्यों के बारे में पता होगा, और इस विषय पर भीष्म ने विस्तार से बात की। हमें राजत्व का पुराना आदर्श
जैसा कि होना चाहिए, पृथ्वी पर देवताओं के मंत्री के रूप में बताया। सबसे पहले राजा को धार्मिक होना चाहिए और फिर उसे तत्परता और परिश्रम दिखाना चाहिए। असफलता में उसे अपने प्रयास दुगने कर देने चाहिए। ये राजाओं का सर्वोच्च कर्तव्य है। उसे सत्य के प्रति समर्पित होना चाहिए और न्याय करना चाहिए। न तो बहुत उदार होना चाहिए और न ही बहुत गंभीर होना चाहिए। उसे अपने लोगों से प्रेम करना चाहिए। जैसे माँ अपने कोख के अंदर के बच्चे को अच्छा समझती है, वैसे ही माँ अपने बच्चे को भी अच्छा समझती है जो बाहर है। अपने लोगों की भलाई के लिए उसे अपनी खुशी का त्याग करना होगा और कार्रवाई में सदैव तत्पर रहकर धैर्य खोना नहीं होगा। अपनी प्रजा की प्रसन्नता, सत्य का पालन और व्यवहार में ईमानदारी राजाओं का शाश्वत कर्तव्य है। उन्हें प्रतिष्ठित, विक्रय नियंत्रित, मिलनसार, वृद्धों का आदर करने वाला, तेजस्वी और उदार होना चाहिए। उसकी प्रजा को उसके राज्य में वैसे ही रहना चाहिए जैसे कोई पुत्र अपने पिता के घर में रहता है। अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा के कर्तव्यों की सर्वोच्चता है। जो नायक कार्य करता है वह बात करने वाले नायक से श्रेष्ठ होता है। लेकिन एक आदमी को शासन क्यों करना चाहिए, युधिष्ठिर ने पूछा। भीष्म ने उत्तर दिया, पहले तो कोई राजा नहीं था। सभी लोग न्यायपूर्वक एक दूसरे की रक्षा करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग लालची होते गए, सुरक्षा के लिए राजत्व राजत्व आवश्यक हो गया और देवताओं ने दिव्य पुरुषों को शासक बनाने के लिए दिया। बाद में महान गुणी व्यक्तियों का पृथ्वी पर राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ और श्रेष्ठ समझे जाने व्यक्ति की आज्ञाकारिता खुशी से प्रस्तुत की गई। इसीलिए कहा गया है, भगवान और राजा में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भाग दूसरा समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसे भी किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो यहाँ पर हम एक विराम लेते हैं, और यदि किसी को कुछ और इसमें ऐड भी करना है तो बोल सकता है। आज वैसे कुछ लोग इसलिए नहीं आए हैं कि वो कुंभ की ओर अग्रसर हो गए हैं गुजरात से, और काफ़ी मैसेज आए कि अंतिम दिन बचे हैं तो कुछ लोग उस ओर भागे हैं। आप तो नहीं जाने वाले शिखर जी? नहीं 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 सर। चलिए, तो फिर कोई और दिख नहीं रहा है। राज जी, प्रमोद जी, सुनीता जी, किसी को कुछ कहना हो, दुबल जी, विवेकानंद जी, सौरभ मिश्रा जी। सर आपको कुछ और ऐड करना हो तो, नहीं तो फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। सर थोड़ी तबीयत भी आपकी गड़बड़ है शिखर जी। हाँ नहीं सर, और कुछ नहीं तो ठीक है। मेरे ख्याल एक और सेशन रह गया है, हम लोग मार्च हाँ, में ले लेंगे। हाँ वो ले लेंगे बाद में। ठीक है सर। हाँ ठीक। तो अर्चना जी, आपसे जी, निवेदन है कि सभा की समाप्ति के लिए। निवाष्टकमी करा। हाँ हाँ, आप जो। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् थैंक यू Thank सो मच अर्चना जी। शिखर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मृणाल जी आप